I welcome you all to the next session of marketing and salesmanship. As you all know, in previous session we discussed about the syllabus part of your marketing, right? Okay. As I have said you, there are 4 units. The first unit consists of salesmanship. So today we will be dealing with the meaning, features, and objective of salesmanship in this session. Am I clear to it? Okay. See, your subject name only say itself says that your subject is about marketing and salesmanship, right? मार्केटिंग भी है और सेल्समैनशिप भी है, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है. तो इन फर्स्ट सेशन, दैट मीन्स इन फर्स्ट सेम वी completed about what is marketing. In second session, that means second sem, we will be dealing with the, or we will be focusing on the concept of salesmanship. Cleared? Okay. Salesmanship has been defined in many ways by different writers. In the words of Peterson and Britt, salesmanship is the process of whereby the seller ascertain and activate the needs or wants of the buyers and satisfy these needs or wants to the mutual continuous advantage of both the buyer and the seller. सेल्समैनशिप वो प्रोसेस है जहाँ पर सेलर अपने बायर के नीड्स को आइडेंटिफाई करता है और उसे सेटिस्फाई करने की 100% कोशिश करता है at the interest of the company as well as at the benefit of the buyer also. According to the National Association of Marketing Teachers of America, salesmanship is the ability to pursue people to buy goods or services at a profit to the seller and with the benefit to the buyer. टीचर्स ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन क्या कहते हैं कि सेल्समैनशिप वो एबिलिटी है सेलर की जो वो बायर को कन्विंस करता है अपना प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने के लिए एट द कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. क्योंकि जब बायर कोई भी चीज़ खरीदेगा तो उसके अंदर सेलिंग प्राइस वो सेलिंग प्राइस पे करेगा, बट व्हेन द बायर इज़ रेडी टू पे द सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स ही इज़ रेडी टू पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड प्लस द प्रॉफिट विच द सेलर विल बी अर्निंग. क्लियर? और सिर्फ बायर इतना ही नहीं करे, सेलर इतना ही नहीं करेगा, बल्कि वो कंज्यूमर को, दैट मीन्स बायर को सेटिस्फाई करने की भी कोशिश करेगा. क्लियर? ओके. फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज़ क्लियर दैट सेल्समैनशिप इज़ नॉट जस्ट हैंडलिंग ओवर द गुड्स टू द कस्टमर एंड टेकिंग द मनी फ्रॉम देम. ये ऊपर के डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि सेल्समैनशिप सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है जहाँ पर वो गुड्स लिए और बायर के हाथ में दे दिया और उससे पैसे लिया, बट true salesmanship is not only an art of including the consumer to buy the good but also an art of guiding them to buy what they need. In short, इन ट्रू सेंस सेल्समैनशिप वो एक्टिविटी है जहाँ पर सेलर हेल्प करते हैं, सेलर हेल्प करेंगे बायर को गुड्स परचेस करने के लिए और उसको गाइड करने के लिए आगे के लिए. क्लियर? इन शॉर्ट, सेल्समैनशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ परसुइंग एंड असिस्टिंग अ प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर टू बाय द कमोडिटी और सर्विस. सेल्समैनशिप वो एक्टिविटी है जो कंज्यूमर को परस्यू करती है प्रोडक्ट या सर्विस बाय करने के लिए. क्यों बाय करने के लिए? और आगे चल के उसको अपना लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाने के लिए. फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप. Salesmanship have several characteristic features. The main features of salesmanship are: salesmanship is a personal selling and it is the oldest form of selling. Salesmanship मतलब जब कोई सेलर किसी प्रोडक्ट को घर घर लेकर जाकर बेचता है या फिर किसी कंज्यूमर से सामने टू सामने बेचता है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्समैनशिप. आप मॉल्स में जाते हो, देन यू गो टू इन द शॉप्स, देयर इज़ अ सेल्स पर्सन हु विल शो हिज गुड्स. जैसे मोबाइल शॉप्स में जाते हो आप मोबाइल परचेस करने के लिए, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप गए और मोबाइल, जैसे डीमार्ट में जो सामान चाहिए आपको आप उठा ले आते हो. मोबाइल शॉप इज़ व्हेन यू गो टू द ऑटोमोबाइल शॉप इज़, और मोबाइल शॉप इज़ there is someone who is ready to show you the brand, show you the
things what you want. along with that he also suggest you, मैडम देखो कि आपका रेंज ये है तो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये मिलेगी आपको. तो इसलिए सेल्समैनशिप बोला गया है कि एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसी एबिलिटी है सेल्स पर्सन की जो कंज्यूमर, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर को गाइड करता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रमोशनल मिक्स. और सेल्समैनशिप ये प्रमोशन मिक्स का पार्ट है. It is the art of selling a product or service. It is all about selling a product by presenting the product to the prospective in a convincing and perceiving manner by which the prospect is induced to buy. It involves direct and personal contact with the buyers. Personal selling में direct contact buyer से होता है. It is a creative art. It creates new want. It is a creative art. It creates new wants. A need may be already in existence, but it is the job of a salesperson to transform the needs into wants. To be very effective, salesmanship also has to be carried out on continuously to perpetuate the demand created once. Salesmanship basically aims at selling a product. It does not stop at that. Actually, it involves selling an idea or one point of view. For instance, salesmanship is the case in the case of a painter. A paint manufacturing concern is not just the sale of a paint, but the sale of an idea, color, shade, beauty, durability, etc. It is an educative process. Salesmanship provide information about the product, their special features and their ability. Next one है objective of salesmanship. The main objectives of salesmanship are to create the demand for the new product. Salesmanship का main objective क्या है? Demand create करना new product के लिए. To maintain and also expand the demand for the existing product. Existing product के लिए demand maintain करना और उसको बढ़ाना, ये भी काम है. पहले तो demand create करना, फिर existing product की demand को search करना और उसको बढ़ाना. To guide the buyers in the proper selection of goods. To build up the goodwill or reputation for the seller. Then beside the objectives of salesmanship could be long term or short term objectives. According to Steele and Candif, the objective of salesmanship could be quantitative or qualitative. The quantitative objective would be comprising on the advertisement of short term company's objective, whereas qualitative objectives are based on achieving long term objectives of the company. Qualitative or long term objectives of salesmanship: to undertake to do the entire selling activity, to serve the existing account in terms of their order, stock position, requirement, schedule of supply performance and collection of payments, to generate new inquiries and new prospects, to convert some of the new prospects into long term consumers, to regularly inform consumer about the product characteristics, technical upgradations and company's commitment to quality conciseness. Next one है to coordinate with the distribution channel members to improve sales and market shares. Seventh one है to collect information from market, consumers, suppliers, distribution channels, members and consultants for use by company management. What are these objectives all about? These are all long term objectives, and these objectives are also known as qualitative objectives. Now the short term objectives of salesmanship is also known as quantitative objective. The quantitative objective or short term selling objectives are important for the company's current operations. These objectives could be to obtain order and execute them to the satisfaction of the consumers, to meet the sales target, to maintain present account and add new consumers, to maintain market share and competitive edge, to achieve sales volume and satisfy companies' product mix norms, to submit sales report regularly as per company's policies. The qualitative and quantitative objectives varies from one company to another company and would largely depend upon the company's standing in the market. Clear to it?
Okay. If you have any doubts and queries, please pin me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Thank you. Be at home. Be safe.